Hi everyone, I am Tanisha and welcome to the session. So, in this session, we'll be covering the basics of Android and then we'll code a very simple app at the end. So, let us start. Guys, you can start with the PPT. Hi everyone. Now let's see what are the components of an Android application. We all know that an app has a front end part and the back end part. The front end part is coded using XML and the back end part is coded using Kotlin, Java or C++. Yeah. So there are introduction to layouts. There are mainly two types of layouts. Now what is a layout? A layout defines the structure in which the various elements on the screen will be arranged. We mainly use linear layout and relative layout, but there are more types of layout also which you can explore. Ria, next slide. Yeah. So linear layout. Linear layout in this all the views are arranged in a single direction. Either it is horizontal or vertical. And the views are stacked one after the other. Even if the width of the view is smaller than the screen of the device, it would still be one below the other and space would be left where the screen was not occupied. The other type of layout is Ria. Yeah. The next type of layout is relative layout. In this, all the views are arranged in relation to one another's position. Now let's look at this example. I made this Google sign-in page. If you look at the 21st line, here you can see it's written layout below image Google. This means that I place the sign-in text view below the image view of the Google image. So you see it's relative to one another. Similarly, the with your Google account text view is placed just below the sign-in text view. Yeah. Now an app has different screens, and all these screens are called different activities. An activity, it's a screen on your device which consists of the user interface. It provides a window in which the app draws its UI. Now let's take an example of the Instagram app. Ria, next slide, please. Whenever we open the app, the first screen that we see is the one on the left. This screen is called the main activity of the app. Every app has a main activity. Now let's say that we opened a person's profile. The image on the right is what we see when we open the profile, right? But this will be called another activity. It will not be the main activity, but it will be another activity. And after this, if we go to another profiles page, that will not be a different activity since it has the same layout, but only the content changes. So all the profile pages are a single activity. Similarly, if we go to a post, then all the post activities will be a single activity. An activity has different states like create, pause, stop, and whenever an activity enters a particular state, the method related to that state is called. Let's look at the different types of methods, which will help you understand better. This whole cycle is called the activity life cycle. On create, on start, on resume, on pause, all these are different methods. They're also called callbacks. Whenever an app is launched, the on create is the first method which is called. It basically draws the logic from the code and creates the activity screen which will be made visible to the user. This on create, on start, and on resume, these three methods are called in quick successions. Like they are called in a matter of seconds. The method on create method, it calls the on start and on resume method in quick succession. The on start method, it
makes the activity visible to the user. But at this stage, even though the activity is visible to the user, it is not interactive. The on resume method makes it interactive. Now, suppose the user got a call or he moved on to another app, then the previous screen will go to the on pause state. And if the user doesn't return to the previous screen, then that activity goes to the on stop method, and then it is ultimately destroyed. But if the user navigates back to the previous activity, then the on restart method is called, and then the on start, and then the cycle continues. So this was an introduction to the activity and its life cycle. Now let's look at the different types of files and folders in the Android Studio. Hello, everybody. I hope I'm audible and clear. So, yeah, my name is Ria Santwal, and I'm part of TSC IGT2W. Since my friend have already introduced you to different layouts and what an activity is, that was all in all about the introduction part. So now let's see about the different files and folders in Android Studio. As somebody opens an Android Studio, there are many number of files and numerous folders, which if a person sees might get distracted or might feel confused as to which file is of uh, preference and which are to used in a particular application. So first of all, we have manifests folder. In manifest folder is basically a Okay, I'll tell you about each and every folder in a little detail. Uh, so manifest folder is where you would put your manifest files basically. Most Android applications, they have only one manifest file, but an application may have several manifest files due to several reasons. For example, application versioning is happening, or for supporting specific hardware. Second is a Java folder. A Java folder in your project will be storing all the source code files that are written in Java programming language. Res folder. This folder, it has numerous folders inside it that will help you separate and sort the resources of your application. Resources basically mean all the needed files except the source code. For example, while developing an application, you might need to include resource files such as app logo, photos, sounds, different videos and animations also. So each file type should be added to its own folder to comply with the Android development standards. So we have these folders inside the res folder. The first one is the drawable folder. The drawable folder, it contains the graphics that can be drawn to the screen. For example, image files that are in extension PNG, JPG, or even GIFs. Various XMLs also that that insert drawable layer list, level list, etc. And you have various files inside this folder. For example, you have bitmap file, you have a layer list, you have level list. I told you about that, but it will be easy for you if you just navigate through them on your own and explore more about that. The second folder is the layout folder. It is used for your layouts only. These are basically used to set up the layout for your activity, and it is used for basic alignment of your layouts, components, widgets, and similar resources that are used for the UI of your application. MipMap folder is the next folder. This folder contains the launcher icon files for the application. For example, when you see there are various applications in your phone which have different icons. So that is just an image that is placed inside the MipMap folder. What we see in an what we see as a launcher icon for an application, you can say. Yeah.
Next is the values folder. For this folder, it contains all XML files, to be specific, which contain simple values. For example, you have strings inside it, integers, and colors also. And we have other folders also, which are animator, color, menu, raw, XML. There are various folders. And the last one is a Gradle script. This is a complete folder in itself, which have the APK files that are built using the Gradle build system. It is integrated inside the Android Studio when you open a project, or you open someone else's project, or you try to make a new project of your own. When we start an application, basically the Gradle build scripts, they are automatically created. So if you have special requirements for your project, you can specify all those requirements inside this Gradle scripts folder. Now let's talk about the views of the Android that Android Studio gives us for viewing particular project. Yes. So first we have, okay. So you can see the red arrow, right? This gives you a drop down with the various options. You can see in the right image, there is project, packages, scratches, Android, project files, and various other. So these are all called as views, in which you can view files and folders in a different format, you can say. See, this is the Android view of what a particular project would look like. So if this is if this project is called as my application, if this application is called as my application, so I have the Android view here on the left side, in the image that is visible on your screen, and we have different files and folders that you can relate to what I said in the, sometime before. There is manifest file, there is Java, there is layout, there is map, there is Gradle scripts also. So Android view contains all these files. Project view. Okay, so this is the project view, where this also contains similar kind of files that I introduced you to. It has Gradle with a different name, but yeah, the functioning is almost the same. It's just the view that is different. This is packages view. Okay, so this is basically what an Android application file structure looks like. I hope the words are visible, because the screenshot I was able to take was this much only and could fit in here. So I magnified them, and I'm going to tell each about each of the file in little detail. So the first one here you see is Android manifest.xml. So as I told you that every project in the Android, it includes a manifest file, which is called as the Android manifest.xml file. It is stored in the root directory of its project hierarchy. This file is an important part of our app because it defines the structure and the metadata. Metadata means data of our application, its components, and its various requirements. This has the various nodes also. For example, you can include activities, services, content providers, etc. inside this. You can also use broadcast receivers that make the application, and you can use intent filters also for and permissions also. So we'll take a look about how this file actually looks in the later version of the session. The second file, which you can see, is the Java one. This folder, this is not a file, sorry, this is a folder. It contains the Java source code files. It has various files inside it. As you can see, com.example.myapplication. These all are subfolders of this folder. They have various Java files inside them. It gets the data from the layout file, and after processing that data, the output, it will be shown in the UI layout. The UI layout is basically the an activity XML file, which will also be visible to you when you will open the XML file and the design pane of it.
The next file is a drawable. The next folder is a drawable. This folder contains a resource type file. That is, drawables basically have variety of files like bitmap images, which are your JPEG and PNG. There is 9-patch files also. There is it can contain vector files also. That is your XML. It can include shape, layers, states, level, scale, various number. Okay, so we've done with the layout one, and now the next one is the mip map. So the mip map folder, it contains the image asset file that can be used in the Android Studio application. Icons can be generated. The launcher icon, as I told you about, the action bar, the tab icon, and the notification icons even. The next one is the colors.xml file. This file contains the color resources of the Android application. Color resources mean from where to pick the color. Like if I'm using some button or some text, what color I want to include in my particular file or my particular project. Strings.xml file. This file contains string resources of the Android application. The different string value, it is identified by a unique name that can be used in the Android application program. This file basically stores string array by using XML language only. So you see, all in all, what you'll be needing is a little knowledge about XML, Java, and I think you're good to go. Then we have styles.xml. This file, it contains resources of the theme styles in the Android application. Theme styles means there are various types of themes, like you can have dark and light. For starters, if you know, there are two kinds of themes, dark theme and light theme. Various applications have made dark theme as their default theme because that is just, it gives that it doesn't harm eyes basically. So this is also written in XML language. And now we have build.gradle module app. So this basically defines the module specification and the build configurations. Here you can add the dependencies, what you need in your Android application. We'll see about these words that I just taken, dependencies and build.gradle module app. This all will be covered later. Don't worry. This might sound confusing, Abhi, but it's okay. Let's see how an Android application looks like. If you open Android Studio, and I hope most of you have already installed it, as was told too. This is how the opening page will look like after you have done some work, like I've done. It's not something good, but I've just included two buttons, encrypt and send, and two um, text fields. So what I'm going to show you is the palette. This palette is basically having all the you can say components or elements you use to just drag from the palette into the design view of your page, Android page, or activity to be specific. Okay, this is just a representation of how different component and or elements look like. This might not be the correct or the exact representation, but I tried my best to explain you because you all are beginners, I guess. So this was the easiest way. If an application looks like this, there is some text written. So this will be called as the component text view, a user interface element that displays the text to the user. कोई भी text जो एक application में खोलने के बाद दिखता है, that is called as a text view element. Okay, now this is the element that is called as a button. A button can have any face, मतलब कोई भी उसका image change करके button can look like anything. Button can have different shape and button can have different sizes and positioning according to what you want. A user interface element
that the user can tap on or click to perform an action. This is an image view. This is not an image to be exact, but this portion concludes that you can insert an image inside this. So image view displays the image resources, for example, drawable resources. Image view is also commonly used to edit the image attributes. Image attributes like spacing and positioning of image, size of the image, and etc. Okay, so I've included this part so to make you understand that these are just different elements that can have positioning according to how the user want it to be. Because the drag and drop facility in Android Studio is way too easy to handle with. So this is just a horizontal view, you can say, which have different elements. First of all, there are two rows, the left row and the right row. The left one having only one element and the right one having six elements. The keeping aside the left row, two columns here, the left column and the right column. The left column have only one element. The right column have six elements. Keeping aside the left column, talk about the right column. The right column have two rows inside it, and each row is having one column, and in each column inside that row we have one element each. I hope you guys didn't get confused. Yeah, so that was all about the files and folders. Now we'll talk about introduction to XML. Okay, so thank you, Ria. Hi everyone, I am Shirin, and I will be walking you through the last few slides. So before you code your first Android app, you should be knowing how you design the layout of the Android app, and for that we use XML. So it basically uses tags to introduce elements into the layout, whether they are views or view groups. So there are various views, image view, text view, editable text boxes, buttons, and so as and when you code, after 5 to 10 minutes you will be coding your first Android app, and so you will get familiar with this much more. Please move to the next slide. Yeah. Hello, Yeah, am I yeah, audible? you are audible, Shirin. Yes, Shirin, you are. Hello, am I audible? Hello. So before you start working on Android Studio, you should be knowing how to access the developer options menu. To access the developer options menu, I guess Shirin got disconnected or. Yeah, she has joined back. Oh, So I guess we can continue now. sure, sure. hello, Yeah, yeah, we are able to hear you clear and loud. hello. Yeah, Hello? Shireen, you're audible. Um, okay. So I was telling. Okay. Okay. So before you start working on Android Studio, you would want to access the developer options menu to your phone, and for that you just have to follow a few steps. You have to go to the settings and hello.
Am I audible? Yes, Shireen, you are audible. Okay. So you have to go to the settings and then you have to click on About Phone. Okay. And then you click on the option Build Number 7 times. And One after second. clicking Sorry on for that, if you have set up a password to your phone, you need to enter that password. 1 second, Shireen. Guys, you can do this side by side. Hello? Like open your phone and follow these steps to go to the developer setting. Okay. Yes. Shireen. Yeah, that would be very helpful. And okay, so go to the settings and then click on About Phone, and then you will obviously see this menu. Then you have to click 7 times on Build Number option, and when you do it, a message would display on your window like congratulations, you are a developer, something of that sort. And then you go back. Ria, can we have the next slide? Okay, then you go back to the settings page, click on the developer option, and then you will see that the developer options is enabled, and it will be there until you disable it, or disconnect it. Now you also have an option that you can allow USB debugging. For that, you simply have to click on developer options and you have to toggle the button and then click OK. So then a message would appear as is shown in the next slide. Ria, can we have the next slide? Close this option, you again toggle it. So it's as simple as that. So it's easy to access Android Studio from your phone. So I would say that it's convenient. And now we will be now you all will be coding with us, with Tanisha Di, your first Android app. So over to you, Tanisha Di. Okay, Kindly. guys. So did you follow these steps to switch on the USB debugging? And do you all have Android Studios installed? You can unmute or reply in the chat. Okay, Ritushi has installed Android Studios. That's great. Anybody else? What about others? I guess a reply would be really helpful from each one of you because we are also trying it hard from our end. So we wanted, full concentration and help. It's okay if you have not installed, but you can reply. In that case, just take notes of everything so that you can do it later on. Okay. So, what about others? Okay, that's great, Ishita. Guys, then open your Android Studios. Okay, I'll do it with you. So, have you all followed those steps to like switch on the developers option? Because
app run करने के लिए you'll have to do that. Okay, that's great. Okay, so okay, then I'll start with the coding part. ओके सो जिनके पास एंड्रॉइड स्टूडियोज है तो सब प्लीज खोल लो अभी, सो यू कैन जस्ट लाइक फॉलो अलॉन्ग विद मी. So new project. So can you see this option ki choose an activity for your project? I won't be able to see your comments now, so if you have any doubt or problem, so you can unmute yourself or just type in the chat box, so the project coordinators will help. Okay, so is everybody at the screen? Okay, so you have to select an activity, select the empty activity. So यहाँ पे give an application name. So okay, so first let me tell you about the application that we will be making. So this will be a very simple app, like a counter app. So इसमें basically you'll have a text view and a button. So user will enter some number in the text view, let's say 7, and on clicking the button, the number will be incremented. So like एक बार click करने पे it will become 8, then 9, then 10, and so on. So this is a very easy application. So let us start. So I'll call it counter or like just count. So यहाँ पे जो भी आपको app का name लिखना है, you have to enter that. Next option is the package name. So package name अभी तो like एज सच यूज नहीं होगा, बट मोस्टली जब आपको अपनी एप्स बाद में पब्लिश करनी होती है तो फिर तब ये नीडेड होता है. ये लोकेशन जहाँ पे सेव होगा लैंग्वेज, सो यू कैन सेलेक्ट इधर Kotlin or Java. So for now we'll be doing in Java. Next is the minimum API level. So this is basically selecting the minimum what should be the Android like API level of the mobile device जिस पे हम अपनी application run करना चाहते हैं. Example, if you select some older version, so ये ज़्यादा devices पे run होगा and newer वाले comparatively कम पे होंगे. This is the percent of devices जिस पे आपकी app run हो सकती है. The reason is क्योंकि of course new वाला like ज़्यादातर mobiles में नहीं होगा, but अगर आप ज़्यादा new वाला choose करोगे, so you'll get more and better features as compared to older versions. So like हमें कुछ balanced सा and according to our needs and audience select करना चाहिए. So for now I'll be going with this and choose Java, okay, and finish. Okay, so कुछ इस टाइप से स्क्रीन आ जाएगी. So those who have Android studios, is this screen visible to you? Like did you like start the Android studios and all? Okay. So I hope you all have opened and you are able to see the screen. So, okay, then I'll continue.
So like let us try to understand यहाँ पे जो basic components वगैरह हैं. So like Ria covered about the file structures and all. So like you can see यहाँ से you can select किस type से you want to see the file structure. So by default Android होगा and वो ही रहने देना अभी के लिए. So basically यहाँ पे like दो folders होंगे जो main है. One is the app and the other one is the Gradle scripts. So app के अंदर manifest, Java and ये resources की file like PPT में explain किया था. So this is the manifest. So basically इससे आप अपनी app का structure and activity and उन सब के बारे में सारी details like you can see over here. And also बाद में अगर permissions लेनी होती है किसी application में for location या something, so we add it over here. But for now we won't be using it. So next is the Java files. So यहाँ पे सारी Java files जो हम add करते रहेंगे वो होंगी. So अभी के लिए we just have one file which is this, the main activity. And this is the resources file. So basically resources is all those parts of your applications which are like not the coding ones. So like except for जो भी coding files है तो बाकी सारे resources होते हैं. So like इसमें images include होंगी if you want to add any images जो कि drawables में होंगी, layouts और बाकी XML files like ये सब PPT में भी explain किया था. So इसके layout folder के अंदर हमारा जो app का layout है, so we can see that. Okay, and lastly we have Gradle scripts. So again this is basically for like automating the process of testing, building and deploying your app. So आपका जो भी Java का या Kotlin की जो coding वाला part होगा and XML का जो layout होगा, so उन सबको combine करके ये APK बना के आपके मोबाइल डिवाइस या जहाँ पे भी रन कर रहे हो, so ये Gradle scripts की हेल्प से we are able to run our applications. तो अगेन इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे अभी. So also like when you run your application, so यहाँ पे आप building की जैसे build हो रहा है वो सब तो उसकी details देख सकते हो. This is the log कि अगर कुछ print वगैरह करते हो, so you can view it in log. And यहाँ पे terminal and if you want to add to dos तो यहाँ पे visible होंगे. Okay, and for running the application you have to select this option. अच्छा, and also for running यहाँ से you can select the device जिसके ऊपर run करना है. So like these are the emulators that I have created. So like I can run on like any of these, or you can also connect your phone via USB cable and उसके ऊपर भी run कर सकते हो. So for now I'll be running this on the emulator. So I'll just show you. So यहाँ पे you can see अभी Gradle build is running. तो अभी हमारी application build हो रही है, install और launch. So अभी अगर if you try to run this application like open करने के बाद empty activity को अपने मोबाइल पे जब रन करने का try करोगे, so you will see this screen. Yeah, because this is our layout. अच्छा, and if you want to create a virtual device, तो वो यहाँ से you can create this option जहाँ पे एक ये phone सा बना हुआ है, create virtual device. यहाँ से you can select कि किस type का create करना है, phone and TV या जो भी. You can select the model of the phone that you want to create and like कौन सा Android API चाहिए and so on. But I'm not creating a new one because I already have a lot of emulators. So yeah, so let us start with the coding part. So again सब लोग इस स्क्रीन पे है ना जिनके पास Android Studios है? Like if you can unmute and say, it will be great.
Yes, Didi. Okay, great. So first we'll start with the layout. So layout से so basically इससे like we'll decide कि हमारी application दिखेगी कैसे जब हम उसे run करेंगे. So I'll remove this. So basically this is the application and इसके ऊपर जो हम components add करते रहेंगे वो हमें screen पे दिखेंगे जब हम run करेंगे. So I'll add a text view. So text view से basically इस पे जो भी text written होगा मतलब basically बस text display करने के लिए use होता है. So I'll also add a plain text. So a plain text is so basically text view is जो बस उसका text visible होगा but user cannot edit. Plain text और edit text के अंदर user can edit the text. Like जैसे text boxes नहीं होते कि enter your name and उसके आगे option होता है कि name enter करने का. So this is जहाँ पे enter कर सकते हैं and जो text लिखा होता है that is a text view. And lastly I'll have a button. So what I want to do is okay. So firstly I'll change their names. Okay, so यहाँ पे click करने पे like अगर मुझे इसका name change करना है या कोई property change करना है so first I'll click on this view. यहाँ पे using this magnifying glass icon I can search for any property. So I want to change the text counter app. I'll increase the size. Let's make it 20. So gravity is basically इसकी उस text view में alignment. I'll select center तो ये center में आ गया. इसमें oh sorry text. I don't want to display anything on the edit text. And button में I'll add a plus button. So this is like the basic UI of my app. So what will happen is the user will enter some number in this text box, in this edit text, and whenever the user presses this button, so that number will be increased by 1. So एक बार देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है. So we can see कि ये सारी चीजें एक जगह पे ऐसे ओवरलैप करके आ गई. यहाँ पे तो सब सही से दिख रहा है बट यहाँ पे सब एकदम साथ में कोलैप्स होके आ गया. So the reason is like probably you can see this red error over here. So missing constraints in the constraint layout. So basically I never specified कि इनकी position on this. Like if I place a button over here, so it does not mean कि run time पे भी ये इधर ही रहेगा. ये एकदम top right corner पे jump कर जाता है. So I have to specify constraints if I want to prevent that. So like when you click on a view तो यहाँ पे ऐसे buttons आएंगे. So यहाँ पे click करके drag करके इसको यहाँ पे लेके जाने से तो basically अभी constraint set हो गया कि इतना distance top से होगा. इसको सेट करने का मतलब कि ये जो सेकंड वाला व्यू है ये इसके ऊपर ही लाई करेगा. एंड ओके इसको सेंटर में कर देते हैं. ओके तो कुछ ऐसा सा बन गया. राइट.
तो now you can see कि अब वो error जा चुका है. Like this is a warning, so but error अब नहीं है. So if we try to run it now, so now it's better. So basically, like in this palette, you can select any kind of view that you want to add to your app. So abhi ke liye I have selected the text view, edit text and button. And जो constraints है, that is to specify कि वो एक दूसरे के relative क्या position होगी उनकी इस like layout के अंदर, so that run time पे वो सब overlap ना हो जाए. And अगर constraints missing होंगे तो यहाँ पे show हो जाएगा. And okay, so another thing you can do is यहाँ पे बहुत सारे options होंगे. So this is an option to remove all constraints. So if I click it right now, तो सारे constraints मेरी ऐप से हट गए जो मैंने सेट किए थे. एंड अब यहाँ पे वार्निंग्स आ रही है कि नो constraints, but like I have applied them again. This is for infer constraints. If you have not applied any constraints, so इसको click करने से वो अपने आप से constraints लगा देगा. So like if you are having any confusion in like applying constraints, so you can just click on this button for now, infer constraints. Okay, and you can also view your file in a blueprint mode or design plus blueprint. But for now, हम सिर्फ design mode पे कर रहे हैं. And through this, you can also like check your app in landscape view. तो अभी के लिए ये नहीं सेट होगा. Although हमें landscape के लिए different file बनानी पड़ती है. But like maybe you can use it in future, but for now we'll focus only on portrait mode. So I guess इतना ही है अभी layout में. Okay, one last thing. So जब हम लोग layout बना रहे होते हैं, so we can you can probably see these two options over here. So one is design and the other is text. So ये जो पूरा काम हमने drag and drop से किया है, we can also write the code for it in XML. So like this is the text view, like we have added. This is for the edit text. Like अगर मैं इसे copy करके यहाँ पे एक और edit text आ गया क्योंकि मैंने उसके कोड में चेंज किया था using text. Basically what I did was ये बटन का जो कोड था मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया दोबारा, तो एक और सेम बटन क्रिएट हो गया, सॉरी एडिट टेक्स्ट क्रिएट हो गया. बट आई जस्ट yeah. Okay, so we have to edit text. I'll just delete it. Text view, edit text and button. So ये हमारा original layout है. Okay, so basically that was just for explaining. You don't have to type the code for this. Of course, drag and drop करना is much easier. So like try to use this for now. So जो लोग ने खोल लिया था, so like are you trying to make a layout right now? Guys, please unmute yourself or write in the chat box. So जो लोग साथ में कोड कर रहे थे, so have you like made a layout or like अभी किस point पे हो?
if you are facing any issues or you want us to wait for a few minutes, so you can inform us. Then I'll start with the coding part. So अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? Like even जो लोग देख रहे हैं and like you are making notes, so do you have any doubt till now? No doubts? Students are replying, but I guess you are not getting the Okay. chats for now. Okay. Yeah, they are visible now. How do I run it? So basically, like when I'm sharing my screen on Android Studio, so मेरे को comments दिखेंगे नहीं. So अगर कोई doubt होता है तो please unmute करके बता देना. दीदी मैंने वो इन कांस्टेंट लेआउट्स डाल दिए थे और मतलब वहाँ कोड करते वक्त मेरे को कोई एरर दिख नहीं रहा है, बट देन वो रन करना कैसे, हाँ यहाँ पे ऐसी बस एक हाँ. वार्निंग वाला आ रहा है, बट देन मेरे को समझ अच्छा. आ रहा है कि इसको रन कैसे करते हैं. यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन होगा, एक ऐसे ट्रायंगल सा. अच्छा मैं ट्राई करती हूँ. उसको हाँ. So आपने अपना फोन कनेक्ट कर लिया है ना? यस दी. ओके. सो अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो शायद वो एक मैसेज प्रॉम्प्ट आएगा आपके फोन पे कि आस्किंग कि वुड यू लाइक टू ट्रस्ट दिस कंप्यूटर, सो उसको येस कर देना एंड उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा. जी मैंने इसको वो ट्रायंगल वाला बटन दबा के देखा, बट देन एक मेरे को आ रहा है कि देयर इज नो टारगेट डिवाइस फाउंड, देयर इज एरर इन रनिंग. अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ सिलेक्टेड है डिवाइस. एक सेकेंड. नहीं अभी नहीं है, मतलब मेरे को दिख भी नहीं रहा है कोई. आई थिंक आपका फोन लाइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उसका डिबगिंग सेटिंग्स शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी. अच्छा तो आपने यूएसबी डिबगिंग ऑन कर ली या हाँ अभी? यूएसबी डिबगिंग ऑन है दी. एक सेकेंड, इंस्टॉल वाया यूएसबी और वो भी ऑन कर लेना ठीक एंड है. उसके बाद एक बार ट्राई करके देखो. दी जैसे मेरे पहले बस तो मेरे लास्ट 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, वो रन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, ओपन एवीडी मैनेजर एंड ट्रबल शूट डिवाइस कनेक्शन, बस इतना दिख रहा है मेरे को. हाँ, बिकॉज वो कोई डिवाइस डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा. अच्छा ठीक है. अच्छा वेट, आई शो यू. अगर मैं अपना फोन कनेक्ट करती हूँ तो वेट, मैं यूएसबी से कनेक्ट करके दिखाती हूँ. तो अब यहाँ पे लाइक यहाँ पे आपका जैसे फोन डिटेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा. लाइक मैंने भी एक फोन कनेक्ट किया है यूएसबी के थ्रू, तो लाइक इस पे क्लिक करना उसके बाद और फिर प्ले करना. ओके दी. अगर कोई उसमें डाउट हो रहा है ना डेवलपर्स ऑप्शन में, तो एक बार चैट में पूछ लो, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स लाइक विल हेल्प यू आउट. ओके, आई गेस या तो आपके फ़ोन में कोई और सेटिंग भी ऑन करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी वाली, एक इंस्टॉल वाया यूएसबी और यूएसबी डिबगिंग. तो इसको ऑन करने के बाद व्हेन यू विल ट्राई टू रन इट, तो आपके पास एक फ़ोन पे मैसेज आएगा, वुड यू लाइक टू ट्रस्ट दिस कंप्यूटर, तो उसको येस कर देना एंड उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है जी. तो थैंक यू. तो अब आप एक बार ट्राई कर लो, नो प्रॉब्लम. अभी एक बार ट्राई कर लो साइड बाय साइड. हाँ ठीक है. ठीक है. ओके. सो और किसी को कोई डाउट? Okay, then I'll
Okay, then I'll move ahead with the coding part. ठीक है, so next like यहाँ से जावा के अंदर जाके मेन एक्टिविटी वाली फाइल सिलेक्ट करना, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी ओपन होगी तो उस पर क्लिक कर लेना. अच्छा, तो मैं 2 मिनट ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर अभी कोई कोड कर रहे हैं तो 2 मिनट ये सुन लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना. ओके, तो सबसे पहले टॉप पे वी हैव पैकेज. जो स्टार्टिंग में पैकेज नेम हमने डिसाइड किया था, लाइक जो भी उसमें आ रहा था, सो यहाँ पे पैकेज शो होगा. सो लाइक दिस इज द पैकेज नेम. उसके बाद वी हैव द इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स. लाइक जावा में अगर कोई काम करता है तो उसका भी यही फॉर्मेट होता है. सो जो जो चीज़ें अभी तक हमने इंपोर्ट किए तो वो सारी यहाँ पे आएंगी. एंड उसके बाद दिस इज द मेन क्लास. सो दिस इज पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी. सो लाइक इसमें बेसिक उप्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व है. सो दिस एक्सटेंड कीवर्ड इज फॉर इनहेरिटेंस. सो दिस मीन्स कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है, that is a subclass of this app compat activity, which is the like super class or the parent class. So ये वाली जो activity होती है app compat, this is the like parent class of all activities. So जितनी भी हम activities बनाते हैं अपनी application में, तो सब इसी को extend करती हैं. Okay, so like exactly what an activity is. So it is a screen with the UI. So it is basically a window where the UI is visible, and it's a single thing the user can focus on. So like this is the main activity जिस पे हमें दिख रही है. So हम जितनी भी डालेंगे, so that is a subclass of this app compat activity. So that is this line. So उसके अंदर we have this keyword override और एक function. So override keyword again ये oops का एक concept है. So दिस मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन है हम इसको ओवरराइड करना चाहते हैं. सो इसका मतलब है कि जब हमने अपनी मेन एक्टिविटी क्लास को इनहेरिट किया फ्रॉम ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस वेरिएबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे. तो जब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, लाइक इस क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो वो सारे इसके मेथड्स और सारे वेरिएबल्स अब मेन एक्टिविटी में भी आ गए हैं. सो लाइक ये ऑन क्रिएट ऑलरेडी यहाँ पे भी होगा जो इसकी पेरेंट क्लास है, एंड थ्रू इनहेरिटेंस इसमें भी ऑलरेडी है. बट वी वांट कि ऑन क्रिएट रन होने पे वो चीज़ हो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, रादर दैन जो ऑलरेडी उसकी पेरेंट क्लास में डिफाइंड है. सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कि ऑन क्रिएट ये ओवरराइड बेसिकली ये करता है कि ये जो फंक्शन है इसको रन करने पे वो चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए जो हम इसके अंदर आगे मेंशन करेंगे, रादर दैन जो उसकी पेरेंट क्लास में डिफाइंड है. ओके, सो दैट इज द ओवरराइड कीवर्ड. सो नेक्स्ट वी हैव द ऑन क्रिएट मेथड. सो लाइक रितिका एक्सप्लेन्ड, सो लाइक एक ऑन क्रिएट जो होता है, सो दिस इज एग्जीक्यूटेड like when the app is created. Basically जैसे ही आपकी एक्टिविटी क्रिएट होगी मेन एक्टिविटी, तो इसकी क्रिएट होने पे क्या क्या चीज़ें होनी है, तो वो हम इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर लिखेंगे. ओके, तो अभी इसके अंदर ये ऑलरेडी थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है. तो दिस इज super dot on create safe instance state. एंड सो बेसिकली इससे ये हो रहा है कि वी आर इनिशियलाइजिंग द एक्टिविटी एंड क्रिएटिंग इट, एंड इसका जितना भी डेटा है वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द सेव इंस्टेंस स्टेट, और वो हम इस एक्टिविटी में लोड कर रहे हैं. सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड ये जो अभी इतना हमने यहाँ पे लिखा है, इसकी हेल्प से वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एक्टिविटी, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, एंड उसकी जो भी स्टेट वगैरह जो भी उसमें लाइक कुछ इंटरनल पैरामीटर्स होने चाहिए तो हम वो सब सेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सेट कंटेंट व्यू. सो दिस इज बेसिकली ये जो हम कोड लिख रहे हैं इस एक्टिविटी का, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एक लेआउट असाइन कर रहे हैं. तो सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity main. तो हम इस वाले लेआउट को इस वाली से कनेक्ट कर रहे हैं. सो
इसकी जो लोकेशन है ये रिसोर्सेज में है. सो आर इज बेसिकली फॉर द रिसोर्स फोल्डर. तो जितने भी रिसोर्सेज हैं दैट इज नॉन कोडिंग कंपोनेंट्स है हमारी ऐप में, तो सारे आर में होते हैं. सो आर के अंदर जो लेआउट है उसके अंदर जो एक्टिविटी मेन है तो हम उसको यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं. तो यू कैन सी रिसोर्सेज में, लेआउट्स में, एक्टिविटी में. तो अभी तक इसमें ऑलरेडी बस इतना ही है. एंड यू डोंट एक्चुअली हैव टू राइट दिस बिकॉज लाइक ये ऑलरेडी लिखा होता है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. सो हमें मेनली क्या क्या चीज़ें करनी है. व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमें यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया है हमें वो वी वांट टू एक्सेस दैट नंबर. We want to increase that number by 1 and display it again. And ये तब करना है जब ये बटन प्रेस हो. So हमें इसके दो components यूज करने हैं basically. One is the edit text and one is the button. Okay, so and for doing that सबसे पहले we'll have to declare variables. So I want one variable for edit text. तो ये edit text type का होगा. Edit text, I'll call it E. And another I need for a button, I'll call it B. तो मेरे पास अब दो variables है, one edit text type का और एक button type का. So next what I want to do is कि I want to connect these variables with like these components that are present in the layout. So अभी ये लेआउट वाले डिफरेंट है और हमने यहाँ पे ये बना तो लिए बट हम चाहते कि ये उससे कनेक्ट भी हो जाए हमारी लेआउट फाइल से. तो उसके लिए ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आई विल राइट ई इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी. तो बेसिकली हर एक व्यू की एक आईडी होती है. This is the ID for this text view which is edit text. So हम इसके ID के थ्रू इसको recognize करने वाले. So find view by ID. So ये resources में ही होती है dot ID dot जो भी इसकी ID हमने दी थी. But ये वाला जो method होगा that will return a view, like it can be a button, it can be edit text, but हमें specifically इसमें से edit text चाहिए. So basically इस वाले function से हमें एक view type का object return होगा and हम उसको edit text में convert करना चाहते हैं because we know कि ये ID एक edit text की है and we need an edit text, right? So I'll do the same thing for the button. B equals to button find view by ID dot ID dot I hope उसकी ID button ही है. Yeah. So now I have two like components. One is edit text, the other is button, and ये दोनों अब उन वाले से connect हो गए हैं. So next what I want to do is कि जब भी ये button press हो तो हम इस edit text से जो भी number है वो like उसको access करें, उसको store करके increase by 1 and display. But ये सब तभी होगा जब button पे click हो. तो like इस टाइप की चीज़ करने के लिए we use event listener. So basically event listener होते हैं जो कोई भी event की occurrence detect करते हैं and whenever that event is detected तो उसके corresponding वो basically कुछ code execute करते हैं. So in this case the event will be clicking on the button. तो हमारा जो ये बटन है हम इस पे लिसनर लगाना चाहते हैं कि जब भी क्लिक हो बटन पे तो वो डिटेक्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग कोड रन करे. तो इसके लिए वी राइट बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर. तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. इसके अंदर सिलेक्ट न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर. तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो इस पे क्लिक करना एंड ये पूरा कोड आ जाएगा.
सो बेसिकली अब हमने अपने बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक लिसनर ऐड कर दिया है, एंड जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये जो ऑन क्लिक मेथड है ना, तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो रन होगा. ओके, सो व्हाट डू वी वांट टू डू? सबसे पहले हमें उस एडिट टेक्स्ट में से उसका नंबर एक्सेस करना है. सो बट जब भी हम लोग किसी टेक्स्ट बॉक्स से, यूआई से, जब हम उसका टेक्स्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, सो वी कैन ओनली गेट इट इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. So I'll declare a string type variable. We want to get it from edit text, which is e. So e dot get text. So get text method is used for getting the text of like that text field. Dot to string. तो इसको string में convert कर दिया. So let's say user ने 7 enter किया था. So now we have 7 as a string and not as a number. So next we'll have to convert it to an integer. So int n equals to integer dot parse int. So ये जो parse int method होता है, that is used for extracting a number from a string. So I'll write the string s. So ये string s से हमें एक number हम उसमें से निकालेंगे, and वो हम n टाइप के इंटीजर टाइप के n वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू इंक्रीज. तो अब जो यूजर ने एंटर किया था 7 नंबर, तो अब वो हमने गेट कर लिया है एंड उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया. तो नेक्स्ट वी वांट टू इंक्रीज इट बाय 1 एंड डिस्प्ले इट बैक इन द एडिट टेक्स्ट. सो व्हाट आई विल डू इज e, which is the edit text dot set text. So set text method is used for setting some text to the edit text, as the name suggests. So n plus 1. So हमने n get किया था, तो हम n plus 1 उसमें set कर रहे हैं. But n plus 1 is basically integer. ये integer value होगी. And set text method में we have to pass a string. So the easiest way to convert an integer to a string is to add a string. So I'm adding an empty string to this value. तो अब ये पूरा चीज string में convert हो जाएगा, and yeah, and this will be displayed. तो एक बार इसे रन करके देखते हैं. I don't know, दोबारा रन करके देखते हैं. Yes. So अब ये प्लस दबाने पे नंबर इंक्रीज हो रहा है. बट इसमें एक छोटा सा कैच है. तो अगर मैं इसको एम्प्टी रख के ये दबाऊंगी तो मेरी ऐप क्रैश हो गई. सो द रीज़न इज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टेक्स्ट व्यू में से स्ट्रिंग गेट करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने तो स्ट्रिंग कोई डाली ही नहीं. सो दैट इज एक्चुअली अ नल वैल्यू. सो जब हम उस नल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ नल पॉइंट एक्सेप्शन, एंड जब भी ऐसी एक्सेप्शन आती है तो आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी. So to prevent that, you should apply some checks to make sure कि वो empty ना हो. So I'll do it right now. तो उसके लिए you can use this method. Text utils dot is empty. Yes. So this will check कि s empty ना हो. So if it is empty, तो ये वाला कोड इसके करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट होगा. एल्स हम ये करेंगे. ओके, सो हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है. सॉरी, वी उसके इनपुट से हमने एक स्ट्रिंग बनाई. देन वी आर चेकिंग इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी. तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बट इफ इट इज नॉट एम्प्टी फिर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसका 1 से इंक्रीज करके सेट कर देंगे.
तो अब देखते हैं क्या हुआ. So अब दबाने पे कुछ नहीं हो रहा. If I am writing 7, अब इंक्रीज करूंगी तो इंक्रीज होगा. बट अगर लाइक मेरा टेक्स्ट भी एम्प्टी है, अब क्रैश नहीं होगी. ओके, बट नाउ आई वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज कि अगर मेरा टेक्स्ट भी एम्प्टी है तो यहाँ पे एक मैसेज शुड बी डिस्प्लेड कि लाइक एंटर सम नंबर. सो मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए इन एंड्रॉयड वी यूज समथिंग नोन एज टोस्ट. So this is the syntax: toast dot make text. So first argument will be uska context. So main activity dot this. So because ये हम main activity में display कर रहे हैं and this is used to refer to जो भी activity है or the parent. जो message display करना है वो यहाँ पे. So I'll write enter number. एंड लास्ट में उसकी ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन के लिए वी हैव टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और लेंथ लॉन्ग. सो आई विल बी डूइंग टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और इसके एंड में डॉट शो. अदरवाइज ये टोस्ट शो नहीं होगा. एंड सेमीकोलन. तो अब इसे दोबारा रन करके देखते हैं. तो अगर कोई रैंडम वैल्यू है वो इंक्रीज होगी. एंड इफ कुछ भी नहीं है और अब मैं प्रेस कर रही हूँ, सो आई विल गेट अ मैसेज एंटर अ नंबर. So yeah, this is the app that you have to create right now. Those of you who can with the Android Studio. Okay. Okay, so tell me, do you have any doubts? And you can start like coding ये वाला part. So guys, do you have any doubts? So जिसे रन करने में प्रॉब्लम हो रही थी अब रन हो गई एप्लीकेशन. हाँ दी हो गया. Okay, that's great. And जो लोग कोड कर रहे हैं, so have you like completed the XML part? Guys, let me know if like अभी currently किस part पे हो. If you want to wait, like you want us to wait for some time so that you can complete, or like if you have confusion anywhere, so you can ask. Okay, I'll check the comments. Okay, so no doubt. Guys, do you want us to wait or like should we move ahead? If anyone is having any doubt in the coding part or in the
emulator part, you can ask now because you will be doing a project that you have to make as a homework. Yes, we'll give you a task afterwards. So if you have any doubt, you can ask right now. Or if you want us to wait for a few minutes while you are coding, so you can let us know. Okay, so is anybody still coding? Just write a yes or no in the chat. Otherwise, we'll move ahead. Okay, I guess nobody has any doubts then. Okay, great. So basically, your task will be very similar to create a calculator app. So what you'll need to do is like add two edit texts, like for getting two numbers. So user has to enter two numbers, and on pressing the button, let's say one button is for the sum. So on pressing this button, the sum should be displayed in another text view over here. And similarly, you'll have four buttons. Okay, I'll give you an example. Like this button would be for minus, another will be for multiplication, another will be for division. So यूजर से दो नंबर्स लेने हैं एंड द प्रोसेस विल बी सिमिलर. सबसे पहले दोनों इनपुट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग से इंटीजर में यूजिंग द पास इंट मेथड, और फिर दोनों का फिर हर एक बटन पे इंडिविजुअली ऑन क्लिक लिसनर ऐड करना है, एंड ऑन दैट लिसनर like according to the button you have to either display the sum, difference, multiplication or division on another यहाँ पे on a label. So that will be the calculator app. So अभी के लिए you have to do this. Okay, great. Bhavna, what do you want me to repeat? Should I repeat the task again? Acha, steps. Okay. Okay, I'll explain it once again. Okay. Okay, I'm explaining it with respect to this counter app. So first step is कि हमें edit text में से जो भी यूजर ने टेक्स्ट एंटर करा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है. ओके, फर्स्ट टास्क लाइक फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स जो जो व्यूज हम यूज करने वाले हैं, एडिट टेक्स्ट बटन वगैरह, उनको डिक्लेयर करो और एक्सएमएल फाइल के साथ कनेक्ट करो. नेक्स्ट विल बी टू जो भी यूजर ने एंटर करा है उस चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो यूजिंग द गेट टेक्स्ट मेथड. उसके करने के बाद यू हैव टू कन्वर्ट इट टू एन इंटीजर. एन इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन, लाइक जो भी काउंटर में यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 1. इन एडिशन जो कैलकुलेटर में करना होगा, सो यू हैव टू ऐड अनदर नंबर, एंड फाइनली उसको सेट टेक्स्ट कर देना. बेसिकली कैलकुलेटर में ये स्टेप्स होंगे, दो एडिट टेक्स्ट होंगे. पहले एक में से जो भी यूजर ने वैल्यूज एंटर किए उसको एज अ स्ट्रिंग ऑब्टेन करो, फिर दूसरे में से. उसके बाद
दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करो. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बटन, लाइक इफ इट इज एडिशन बटन, तो जो दोनों नंबर्स हमने दोनों एडिट व्यू से ऑब्टेन किए, दोनों का सम डिस्प्ले करना है. इफ इट इज अ मल्टीप्लिकेशन का बटन, तो पहले उसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर ऐड करेंगे और उस लिसनर के अंदर जो ऑन क्लिक मेथड होगा उसके अंदर बेसिकली विल डिफाइन कि जो हमने जो दो इंटीजर्स लिए थे यूजर से, उनका प्रोडक्ट वापस से एक नए लेबल के अंदर डिस्प्ले करना होगा. इफ यू आर एबल टू मेक दिस ऐप, तो कैलकुलेटर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अच्छा, एंड ऑल्सो मेक श्योर like whenever you are like converting it to an integer, converting a string to an integer, so एक check कर लेना कि string should not be empty, otherwise empty string पे आपकी application crash हो जाएगी. And then you can add this condition using a toast कि enter a number, and even you can add this in division कि अगर like if you're dividing two numbers, so second one should be non-zero, so like you can add this condition division वाले part में. Okay, so any other doubt? Like, do you want me to explain anything again? Okay, no problem. Okay, so should we move ahead? So I guess और किसी को doubts नहीं है तो okay, so basically how many of you are planning to like code in Kotlin? Ritushi, for taking the input of two numbers, basically you'll need to add two edit texts. Like text के अंदर जो plain text होता है, ये एक और add कर लेना. This will be for input number 1, this will be for input number 2. जैसे हमने एक इसके लिए किया है ना, हमने string s बोला, this is e dot get text, so you'll have to write another string, like this is the string 1, string 2 will be जो second edit text होगा e2 dot get text. उसके बाद we have converted it to integer, so यहाँ पे हमने int n1 होगा integer dot parse int from the first string. So secondly, you will have to make another string for the second edit text और उसको again similar way में एक और integer में convert करना होगा. Okay, so I hope that clears your doubt. अच्छा, so Java में कितने लोग प्लान कर रहे हैं कोड करने का, एंड Kotlin में कितने लोग? So like there were some of you who wanted to code in Kotlin. So for today's session, like we did it in Java, and because of time constraint हम पूरा Kotlin में explain नहीं कर पाएंगे, like पूरा code नहीं कर पाएंगे, but like we'll just explain the code to you and basically क्या steps होंगे and कैसे difference है. So जो लोग Kotlin में interested है, please ध्यान से सुनना. Okay, so I'll stop sharing. Ria, you can start with the Kotlin code. Hello, is my screen Yes, Ria. visible? Okay, so hi all, this is the code in Kotlin. So in Kotlin, we don't have to use semicolons at the end, okay? And the code is very much less. So
लाइक जैसा कि जैसे जावा में वी यूज्ड टू राइट एक्सटेंड्स हियर, तो यहाँ पे अगर हम कोलन लगाएंगे ना, दैट विल डू द सेम थिंग. एंड ऑल्सो थोड़ा सा जो सिंटैक्स है वो चेंज होता है. जैसे कि उसमें जैसे जावा में हमने देखा था, तो उसमें लिखा होता है बंडल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट. दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा इंट ले, इंट, तो अगर हम किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं पैरामीटर, तो हम लिखते हैं इंट ए. सो कॉटलिन में व्हाट वी डू इज ए कोलन और इंट. ठीक है, तो हम जो डेटा टाइप होता है ना वो हम बाद में बताते हैं. सो ये जो ऐप है, सो बेसिकली इसमें क्या है कि आई हैव अ टेक्स्ट व्यू. इसमें इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, व्हाट आई हैव डन कि मैंने पहले से ही उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है. एंड आई हैव 2 buttons. वन इज प्लस, तो जब मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगी देन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन जब मैं सबट्रैक्ट पे क्लिक करूंगी तो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सो नाउ अब जब क्योंकि मुझे इनिशियलाइज करना है, सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है काउंट. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको 0 वैल्यू दिया है, तो जो वेरिएबल काउंट है इसका जो डेटा हो गया वो इंट हो जाएगा. अब बाद में लेटर ऑन अगर मैं इसको कुछ और वैल्यू असाइन करूँ, तो उसका जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 0 स्ट्रिंग में दिया, देन इसके जो डेटा टाइप हो जाएगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा. ओके, और सो नाउ काउंटर व्यू जो है वो मेरा टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर, एंड ऐड बटन और आई हैव सबट्रैक्ट बटन. और यहाँ कॉटलिन में जो सबसे, क्योंकि कोड बहुत कंसाइज हो जाता है, तो इस वजह से हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती कि हम गेट फाइंड व्यू बाय आईडी से उनका रेफरेंस ले. हम उनका डायरेक्टली जो हमने आईडी दिया होता है, हम उससे ही उसको यूज कर सकते हैं हमारे कोड में. सो मैंने काउंटर व्यू दिया था, सो व्हाट आई हैव डन हियर काउंटर व्यू डॉट एक्स. सो मैंने काउंट जो है, क्योंकि वो इंटीजर है, तो मैंने उसको string में कन्वर्ट किया, एंड देन मैंने टेक्स्ट व्यू की वैल्यू है वो मैंने 0 इनिशियलाइज करी यहाँ पे. एंड देन व्हाट हैव डन यहाँ पर ऐड बटन में जैसे ही सेट ऑन क्लिक्सनर लगाया है मैंने, सो जैसे ही वो बटन क्लिक होगा काउंट प्लस प्लस होगा, एंड देन वो स्ट्रिंग में चेंज होकर टेक्स्ट व्यू का जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगा. सेम इज विद the subtract button. Okay, so I've already compiled this, and this is how our apps look like. So is that visible? Hello, are you able to see my app? Are you running on an emulator? Yes. No, it's not visible. I think you'll have to share your window, Okay. okay, instead of one screen. Okay, I'll start sharing again. Yeah, you can just share the emulator window. So now are you able to see my emulator? Yes, now it's visible. Okay, so as I have initialized it to 0, so सबसे पहले 0 आया, then when I'm clicking plus, it is increasing and then it's decreasing. Okay, so जो properties होती हैं जैसे getText and setText, that are same होती है वो Kotlin में. So if you want to make the app जो आपको पहले बताया गया था, तो वो भी बहुत easily से बन जाएगा. Okay, so that's all from my side. Thank you. So basically it was the same app, but an extra button was added for like decreasing the value. So उस पे क्लिक करने पे हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स था उसका नंबर लेके उसको -1 करके दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं. So okay, so that's all for this session. So guys, we will be sharing the codes with you and also the PPT. So we'll end the session now. If you have any doubts, so you can ask. Okay, we'll share the recording of the session. No problem.